ओके चलो, इज इट क्लियर नाउ? क्लियर और नॉट? Let me know in chat box. Is it clear for everyone? Okay. Okay, चलो अभी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया था पूरा, और कैन आई एक्सप्लेन इट सेकेंड टाइम? Okay. So let me explain this question second time. So देखो यहाँ पे क्या पूछा गया हमें, we want to find the angle between two curves at the point 1 1. It means simply we want to find the angle between tangents at point 1 1. Angle between tangents at point 1 1, right? So uh, for finding the angle between tangents, we want to find the slope of this tangent and slope of this tangent. So for finding the slope of the tangents, we are going to differentiate this with respect to x. So dy by dx is equals to 2x, 1 is equals to 2y dy by dx, making subject dy by dx 1 upon 2y. So putting x is equals to 1, and here also x is equals to 1. So slope of the first tangent is 2 and slope of the another tangent is 1 by 2. So now tan theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. So now m1 is 2 and m2 is 1 by 2. So substituting all the values, we are getting here 3 by 4. It means theta is equals to tan inverse 3 by 4. So angle between these two curves is tan inverse 3 by 4. But if they are asking for, here they are asking for the angle between 1 1 at 1 1. If they are asking for angle between the tangents at 0 0, अब देखो 0 0 पे एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होगा, तो 0 0 पे एंगल बिटवीन द कर्व्स हो जाएगा पाई बाई 2. वो कैसे, देखो यहाँ पे 0 0 पे इस कर्व का अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा तो ये टेंजेंट मिलेगा कि नहीं, ये टेंजेंट मिल गया, एक्स एक्सिस टेंजेंट मिलेगा, इसका टेंजेंट क्या होगा, ये वाई एक्सिस टेंजेंट मिलेगा, और द एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई इज 90 डिग्री. It means if they are asking at 0 0, then at 0 0 angle is 90 degree, or you can say pi by 2, but at 1 1 the angle is tan inverse 3 by 4, right? Okay, so take a screenshot of this. And let's start the next question. Question number 13. Which came in IIT 2000. Thirteenth question. If the normal to the curve y is equals to f of x, y is equals to f of x at the point 3 4, makes an angle 3 pi by 4 with positive x-axis, makes an angle 3 pi by 4 with positive x-axis. So normal is making an angle 3 pi by 4 with positive x-axis.
what is the value of f dash of 3? F dash of 3 is equals to blank. Okay, चलो. So अब देखो, अगर यहाँ पे एंगल नॉर्मली मेकिंग एन एंगल 3 पाई बाय 4 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होगा कि जो नॉर्मल का जो स्लोप है, नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल्स टू tan 3 पाई बाय 4. नॉर्मल अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 3 पाई बाय 4 एंगल बनाएगा तो उसका स्लोप हो जाएगा tan 3 पाई बाय 4. tan 3 पाई बाय 4 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, so tan pi by 4 is -1. So slope of normal is -1. It means slope of tangent at this point. What is the slope of tangent at this point? Reciprocal and opposite, it means slope of tangent is 1. Slope of tangent is 1, and you know very well that the slope of tangent is 1, then slope is what, dy by dx, and here dy by dx is what, f dash of 3, f dash of x, and we want to find the slope of normal at which point, at point x is equals to 3. It means it is f dash of 3, and we know that the slope is 1, so it is 1. So value of f dash of 3 is 1. Value of f dash of 3 is 1. This is the question of IIT 2000, very easy type of question. Okay, so got it. Okay, everyone got it. Okay, our next question, problem number 14. Zero to 1. X belongs to 0 to 1. It means x is lying in between 0 to 1. The options are given. A is equals, A option is e raised to x is less than 1 plus x. B option is log 1 plus x is less than x. C option is sin x is greater than x. And D option is log x is greater than x, right? Log x is greater than x. Okay, so this question can be solved with the help of calci easily, but we don't have a calci in IIT examination, so we have to solve this problem with the help of the method, right? But if you have a calci, then you can take the value x is equals to 1 by 2, because 1 by 2 is lying in between 1 0 and 1, and try to putting the value x is equals to 1 by 2 in all the options. We the option which satisfying the value 1 by 2, inequality holds good, and that will be your answer. You can solve with the help of calculator very easily, but we do not have a calci, so here e raised to x is e raised to x is there. So first of all, taking y is equals to e raised to x, y is equals to e raised to x, and dy by dx, what is dy by dx? dy by dx is also e raised to x. अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि x is equals to 0 पे मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ, x is equals to 0 पे मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ, यानी कि x is equals to 0 पे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, e raised to 0, e raised to 0 यानी कि 1,
the slope of the tangent at point x is equals to 0 is 1. So स्लोप मिल गया हमें. अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equal to m into x minus x1. So what is the value of y1 and x1? Y1 and x1 are the point at which we are going to draw the tangent. So the point is, substituting x is equals to 0, we will get 1. So 0 1 is the point. So x1 y1 is 0 1. Therefore y minus 1 is equals to m equal to 1 x minus 0. यानी कि y is equals to x plus 1. Y is equals to x plus 1. This is the tangent at which point? At point x is equals to 0. अब देखो मैं e raised to x का कर्व बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे. So e raised to x का कर्व कैसा मिलेगा? यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 0 1 पॉइंट जो कि e raised to x कर्व पे लाई कर रहा है, राइट? सो दिस इज द कर्व ऑफ y is equals to e raised to x. अब 0 1 पे मैंने एक टेंजेंट बनाया कि नहीं? तो ये जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरह से पास होगा कि नहीं? ये जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरह से पास होगा. और ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? y is equals to x plus 1. अब देखो अच्छे से इस कर्व को ऑब्जर्व करो और ये टेंजेंट को ऑब्जर्व करो. 0 to 1, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है. तो 0 to 1 में कौन सा टर्म लार्जर है? e raised to x लार्जर है कि x plus 1 लार्जर है? In between 0 to 1, e raised to x is larger. In between 0 to 1, e raised to x is larger. Larger from x plus 1. So e raised to x is greater than x plus 1. E raised to x is greater than x plus 1. So a option is automatically cancelled. So now we are going to take the logarithm both the sides. So x is greater than, देखो यहाँ पे x आगे आ जाएगा, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे आ गया log x plus 1. So x is greater than log x plus 1. But if we change the left hand side as right hand side and right hand side as left hand side, then greater than becomes less than. So log 1 plus x is less than b. B of correct. Okay, so we can find out with the help of curve. ओके चलो समझ में आ गया सबको. Okay, if you have any doubt then let me know. Okay, so please take a screenshot of this and let's start solving next question. So our next question is 15th question. This is the question of IIT screening 2000. This is the question of 2000, IIT screening 2000, right? Now question number 15, very easy question. You can solve it in just one step. Consider the statements S and R. So S statement is given that the sin x and cos x are decreasing. Sin x and cos x are decreasing in the interval pi by 2 to pi. In the interval pi by 2 to pi. So pi by 2 to pi. In the interval pi by 2 to pi, it means it is the second quadrant. So in the second quadrant, the sin x and cos x both are decreasing. Yes, very correct. Now the statement R is given that if a differentiable function is decreasing in A to B, if a differentiable function is decreasing in the interval, differentiable function कोई भी है वो function क्या है? Decreases है.
इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल पे, a to b पे, then its derivative also decreases. its derivative means अब देखो यहाँ पे f of x है वो डिक्रीजिंग है, देखो अच्छे से समझना ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट 2 है वो अच्छे से समझना। f of x क्या है, डिक्रीजिंग है, f of x a to b में डिक्रीजिंग दिया है हमें। if f of x is decreasing in a to b, then f dash of x is what, less than 0, f dash of x is less than 0. Now they are asking that f dash of x is also decreasing, f dash of x भी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं वो डिसाइड करना है। तो देखो मैं अगर इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा f, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव करेंगे d by dx of f dash of x, तो f dash of x की वैल्यू तो, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो, लेस देन 0, देन दिस विल बी ग्रेटर देन 0, इफ दिस इज लेस देन 0 देन दिस विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि आवर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। सो in the option S is correct, D option is correct, S is correct and R is wrong। आपको पता है sin x and cos x both are decreasing। देखो अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं, f of x is equal to sin x दिया है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f dash of x which is cos x, f dash of x is cos x। अब ये देखो cos x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, यानी कि f dash of x लेस देन 0 मिला, लेस देन 0 यानी कि sin x is decreasing in सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड वन भी ले लेते हैं, f of x is equals to cos x, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा f dash of x minus sin x, माइनस साइन एक्स यानी कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, लेस देन 0। तो एफ डेस ऑफ एक्स हमें लेस देन 0 मिल गया, यानी कि ये भी क्या है, डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, तो दोनों डिक्रीजिंग, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Okay, so number 16, in the 16th question, let f is 0 to infinity tends to r, and f of x, capital F of x is equal to 0 to x f of t dt, if f of x square, capital F of x square is equal to x square into 1 plus x square into 1 plus x, then find f of 4, then find it. This is the question of IIT 2001, IIT 2001 question. Okay, and the options are 5 by 4, 7, 4 and 2. Okay, we are taking this question as a numerical type question, so we have no option। सो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट वेरिएबल के टर्म में है, और जो फंक्शन, ये लिमिट कौन से टर्म में है, वेरिएबल के टर्म में, यानी कि हमें न्यूटन लिबनिट्ज हमें फॉलो करना होगा। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, लिबनिट्ज क्या बोलता है पता है आपको, न्यूटन लिबनिट्ज, इफ y is equals to given that f of x to g of x and such function is given f of h of t dt, h of t dt, this is the function। So for finding the derivative of this function dy by dx is equals to, फर्स्ट हमें क्या करना है, फंक्शन को, अपर लिमिट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है, अपर लिमिट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो h of g of x हो जाएगा, और लिमिट का, अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि h of g of x into g dash of x माइनस लोअर लिमिट को फंक्शन में अप्लाई करना है, लोअर लिमिट को फंक्शन में अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, h of f of x into f dash of x। so this is the basically the Newton Leibniz rule, right? so अब देखो f of x हमें क्या दिया गया, 0 to x f of t dt, और f of x स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर into
प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं कर दूं इसे, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर। एक्स को हमें सिर्फ रिप्लेस करना है, किससे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करना है, तो एक्स एक ही जगह पे है, इसलिए हमें एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर से। और आपको अच्छे से पता है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ एक्स को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि मुझे ये दोनों फंक्शन को कंपेयर करना है। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, इसलिए मैंने ये किया सिंपल स्टेप, राइट। अब देखो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म इज 1 प्लस सेकंड टर्म इज 1 प्लस एक्स आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 2x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लिबनिट्ज रूल। सो फंक्शन में सबसे पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। और फिर क्या करना है हमें, फिर करना है हमें इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, राइट, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो एफ ऑफ 0 और 0 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड टर्म आएगा ही नहीं, राइट, तो यही हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 4। क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4, स्मॉल एफ ऑफ 4, नॉट कैपिटल एफ ऑफ 4, वी वांट टू फाइंड स्मॉल एफ ऑफ 4, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें 4 मिल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एफ ऑफ 4 मिलने वाला है, कैसे मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करके, तो दोनों साइड में x इज इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इज 3 into 2 to the 4 is equals to f of x square, f of x square यानी कि f of 4 into 2 into 2 is 4. So now here 4 3s are 12 plus 4 is 16 is equals 16 by 4 is equals to f of 4, that it means f of 4 is equals to 4. So this is the answer of this question. F of 4 is equal. So answer for our question is 4. This question can be also taken as question because the answer is coming in numerical data. क्या सबको, got it everyone? Okay, so take a screenshot of this and let's move forward to the next question. Okay, question number 17. In the 17th question, f of x is equals to x into e to the power x into 1 minus x. Then f of x is देखो increasing in minus 1 by 2 to 1, decreasing on r, increasing on r, or decreasing on minus 1 by 2. This is a question from IIT Screening 2001. IIT Screening 2001. Right? And we want to decide in which interval the function is increasing or decreasing. There are 4 options given, but first we want to find the f dash of x. So first term at outside, it means x is at outside.
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इट मींस, अब देखो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट? तो ई रेस टू हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा एफ डेस ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट टर्म एट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म इज ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 2x। चेन रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस सेकंड टर्म एट आउटसाइड, सेकंड टर्म इज e raised to x minus x square which is at outside, derivative of first term is 1. So now take common, e raised to x minus x square is common, so now remaining term is x minus, अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x minus 2x square प्लस 1, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो ये हमारे पास यहाँ पे रह गया e रेस टू x माइनस x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि x माइनस 2x स्क्वायर। अब एक और माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, e रेस टू x माइनस x स्क्वायर माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, यानी कि 2 1 जा 2, 2 को हमें की सब्ट्रैक्शन होके माइनस 1 आया, राइट? सो अभी देखो क्या होगा यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, राइट? माइनस 1 आ गया, तो e रेस टू x माइनस x स्क्वायर, 2x इज कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 इज कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस e रेस टू x माइनस x स्क्वायर 2x plus 1 into x minus 1. So this is our f dash of x. So now we are going to indicate the critical points on number line. So x is equals to minus 1 by 2. One critical point is coming from here. 2x plus 1 is compared with 0. Then we will get minus 1 by 2. X minus 1 is also compared with 0. Then x is equals to 1. But e raised to the power whatever value, the exponential function is always greater than 0. So this value never becomes 0, right? So x is equals to 1 and minus 1 by 2. These are the two critical points. So on the number line, minus 1 by 2 is here and 1 is here. So now at the rightmost side, put the positive sign, and 1 is coming from which power? Odd power. It means sign changes. Minus 1 by 2 is also coming from odd power. It means again sign changes. So it becomes plus. Now in the f dash of x, we have negative sign. Negative sign, it means change all the signs. Minus, plus, minus. अब देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे होगा, प्लस इनफाइनाइट यहाँ पे होगा। अब इसकी फाइनल साइन कौन सी है? ये माइनस, ये प्लस और ये अगेन माइनस। तो यहाँ पे ये फंक्शन इनटू इन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 by 2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अगेन इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो देखो अब माइनस 1 by 2 1 में फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। So A option is correct. A option is given that increasing on minus 1 by 2 to 1. So function is in, right? Okay. Is asking for explanation of Newton-Leibniz. So here I am going to explain Newton-Leibniz is given as the integral term. Integral term, lower limit is f of x, upper limit is given g of x, and the function is given h of t dt. अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसके डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे तो dy by dx हो जाएगा। अब न्यूटन लिबनिट्ज का रूल क्या बोलता है कि अपर लिमिट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि t की वैल्यू को रिप्लेस करना है g of x से। सो h of g of into derivative of upper limit plus substituting lower limit into function, it means h of f of x into multiplying the derivatives, Newton substitute करो upper lower limit के multiply. So very easy to understand. Okay, so in the previous question, taking one example of Newton-Leibniz, in the previous the example is like this. It means Newton-Leibniz अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे dy by dx ले लेते हैं, अपर लिमिट को फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है यानी कि f of x स्क्वायर
और अपर लिमिट जो है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि x² का डेरिवेटिव 2x प्लस लोअर लिमिट को फंक्शन में सप्लाई अप्लाई करना है, तो f ऑफ 0, और 0 का डेरिवेटिव आपको पता है कि 0 होता है, यानी कि हमें यहां से मिला था f ऑफ x² इंटू 2x प्लस 0। वेरी सिंपल। Okay, so take a screenshot of this question number 17. Everyone got it or not? Question number 17. Understood everyone? If you have any doubt in question number 17, then please let me know in chat box. Okay, I think everyone got it. Okay. कल फिर से सेम टाइम पे 10 to 12 मैथ्स लेक्चर will be there. Okay, so thank you very much and have a nice day. Okay, bye bye. If you have any doubt in this session, then you can ask me in WhatsApp, or you can call me on my personal mobile number. Okay, so let's finish the session.